हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET एग्जाम फैक्टर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलती है CUET की कंप्लीट गाइडेंस। सो एट दिस पॉइंट व्हेन वी आर लेफ्ट विद ऑलमोस्ट 1 to 1.5 months, or for some it is just 15 days. So for that, you want to score as good as possible and you want to get into your dream college. So for that, I would recommend you to join this platform for your complete and precise preparation. So before moving ahead to today's session, let me introduce myself. So my name is Chiranshi and I am currently pursuing BCom Honours from Hansraj College, University of Delhi. I appeared in CUET 2022, the year it was newly introduced, and I scored 100 percentile in business studies, 99 percentile in accountancy and economics, and 98 percentile in English and mathematics. I come live every day at 8 p.m. on this particular platform, which is CUET ExamFactor's YouTube channel. I discuss some of the important previous asked questions of business studies, some underlying concepts. Along with that, I share my exam experiences, methods, strategies, tips, and tricks that I used during my time. So, that might be helpful for you all to prepare well for your examination for 2024. So before moving on to the session, let's see what ExamFactor has to offer to us. So at this point, what are the two things that must be focused upon very specifically? It's a good revision as well as good practice, right? So पूरे साल हमने पूरा सब्जेक्ट अपना अच्छे से किया, चैप्टर वाइज उसके रिविजन्स करें, but now at this point it is very crucial and it becomes quite significant to revise everything in less time specifically. Along with that, to practice as many questions as possible. So ExamFactor is a one-stop solution for both of these things. ExamFactor offers their crash courses. Crash courses are nothing but the one-shot lecture series जिसमें आपको पूरा चैप्टर, पूरे सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया जाएगा. Along with that, experienced faculty at ExamFactor discusses some of the core concepts, some important questions, some previous asked concepts with you all that might be helpful for your examination. Again, it is available in all the subjects, right from accountancy, economics, mathematics to physics, chemistry, biology, history, political science, and not only these domain subjects but also English language and general test. Moving on to the second thing which I talked about was a good practice. So it more than the revision, now at this point we're left with very less time. For some of you it is just a week or 15 days or a month. So it's very important to practice as many questions as possible, and mock test series gives you that gist, gives you the practice of n number of questions from n number of topics from your subject. It is available in all the subjects, right from accountancy, business studies, economics to mathematics, physics, chemistry, biology to history, geography, political science, psychology, English language as well as journal test. So mock test series का हमारा purpose क्या होता है, significance क्या होता है? मॉक टेस्ट सीरीज हमें एक प्रैक्टिस दे देता है कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, विद इन टाइम फ्रेम में कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने आने चाहिए. बिकॉज इन अ सब्जेक्ट लाइक बिजनेस स्टडीज विच इज कम्प्लीटली थियोरेटिकल, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, बिकॉज उससे क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती है, विच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड accurately attempting questions in your examination within time. So it's quite important, it becomes quite important to practice questions, because उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं. बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट? एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी, उसमें हमारा कोई टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, तो उसमें व्हाट हैपेंस इज कि जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें भी हमारे डायरेक्ट अकाउंटिंग रेशियोज आएंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें भी अकाउंटिंग रेशियोज के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो इस टाइम पे इस चीज में
there is not a major difference for the practical subject, but for a theoretical subject, let's say in business studies there is this topic called importance of planning. तो अगर हमें एक दो इम्पोर्टेंस भी पता होते हैं या फिर कुछ कुछ थोड़ा सा भी आइडिया होता है तो हम सब्जेक्टिव पेपर में उसको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर कर या फिर कुछ लॉजिकल बेस्ड चीजें कर कर करके आ सकते हैं अटेम्प्ट एंड वी गेट मार्क्स, राइट. बट इन अ पेपर लाइक CUET which is completely objective based and MCQ, उसमें जो accurate answer होता है वही correct होगा. You cannot answer multiple questions, right? So it's very important to have and develop that understanding skills and analytical skills on how to analyze questions and understand them and attempt them accurately within time. So you can check out ExamFactor's official website, whose link is given in the description below. You can use my coupon code, which is CDEF20, for straight 20% discount. So we can wait for 2 more minutes so that more people can join in, and then we'll start with today's session. The agenda for today's session is our discussion for the questions as usual, that today we have multiple questions to discuss upon. So हम उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे. Meanwhile, in case there are any doubts, any queries related to this subject or any other subject or in general, any query, you can drop that down in the live chat. I'll try to answer as many queries as possible and help you in as many ways as possible. All right. Let's start with today's first question. First question says, name the process by which aptitudes and skills of employees to perform specific jobs are increased. What is that process known as by which aptitudes or skills एक employee की एक specified job perform करने के लिए increase की जाती है organization में? What should be the correct answer for this question? Development, education, coaching or training? I'll give you 30 seconds to answer this question. In case you know the correct answer for this question, you can leave that in the live chat. All right. So the correct answer for this question is option number 4, which is training. Now let's understand each options one by one and what this question says. This question says the process by which aptitudes and skills of the employees to perform a specific job. Focus on this particular phrase, stress on this, that to perform specific jobs. तो हमने ये डिफरेंस पढ़ा था ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में, दैट ट्रेनिंग फोकसेस ऑन teaching the employees and helps them increasing their aptitudes and skills to perform specific jobs which is completely job oriented. तो ट्रेनिंग में हम job oriented process and job oriented learning पे focus करते थे. So the correct answer would be training here. And why not development, education or coaching? Development basically means it is a complete, comprehensive and more holistic term than training and education. Development focuses on the development and the growth of the individual's skills and aptitudes. Like वो individual की जो self growth होती है, self development होता है, उस पे focus किया जाता है. Then comes education. Education focuses on teaching and giving these solutions to the employees, making them learn new skills and aptitudes. But इसमें ये चीज होती थी कि ये किसी चीज के स्पेसिफिक नहीं होता. इट इज नॉट स्पेसिफाइड, इट इज क्वाइट जनरल. आपको डायरेक्ट सॉल्यूशंस नहीं देते किसी चीज को सॉल्व करने के लिए. दे आर जस्ट द जनरल सॉल्यूशंस और द जनरल गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज व्हिच हैव बीन given to you. And then comes coaching. Coaching includes a coach as well as coachee. So coach guides and makes the other person learn, helps him identify his interests, skills, what he or she is interested in.
कोचिंग का ये मेन पर्पस होता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रेनिंग, which is the process of increasing the aptitudes and skills of the employees which are job specific. Good evening, Rashmi. No problem. This is the first question that we have started for today. Yes, correct answer is training. All right, all right. Training is any process by which the aptitudes, skills, and abilities of employees to perform specific jobs are increased. It is a process of learning new skills and application of knowledge. It attempts to improve their performance on the current job or prepare them for any intended job. In case there are any doubts, any queries related to the subject, related to any other subject, or in general queries, you can let me know and solve your doubts in these sessions here and so. Moving on to the next question. Which element in the communication process involves converting the message into words and symbols? Feedback, message, decoding, encoding. Don't confuse yourself in this question. Understand it clearly. Remind yourself that flowchart which you studied of the communication process, and फिर उस basis पे इसका आंसर बताइए मुझे. Karthik, Rashmi, what should be the answer for this question? Option D. All right, all right. Let's see what should be the correct answer. पहले हम एक बार फ्लो चार्ट समझते हैं इसका. सबसे पहले होता है सेंडर. फिर सेंडर के पास एक मैसेज होता है, जो मैसेज भेजते हैं वो एक मीडियम के थ्रू रिसीवर तक, एंड उसके बीच में they convert that message into words, and that process is known as encoding. So the correct answer is option number D, absolutely right. ये process जो बीच में आता है हमारा, that is encoding, which converts message into words or symbols. और decoding क्या होता है? What is decoding? What is the meaning of decoding then? What do you understand from decoding? Encoding का तो मतलब होता है converting message into words or symbols, the language which we are supposed to speak. Yes, Karthik, correct answer is option number D. My next question is, what do you understand from decoding? Decoding का क्या मतलब होता है? Encoding का तो मतलब समझ आ गया हमें, मैसेज को वर्ड सिंबल्स पे चेंज करना, बट डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? Decoding is the process of converting encoded symbols to the sender. Absolutely right. Correct statement that decoding happens when the receiver receives that message, is going to receive that message. जब वो उस चीज के प्रोसेस में उसको उस मैसेज या फिर जो वो encoded लैंग्वेज है वो उनके तक पहुंचती है, उस टाइम ड्यूरेशन में जो प्रोसेस वो चलते हैं, वो जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज डिकोडिंग. Yes, decoding means interpreting and understanding the message. Absolutely right. Absolutely right statement. Very good. So encoding is conversion of message into words or symbols, and decoding is conversion and or interpreting and understanding and converting the encoded words, symbols into the language which the sender or which the receiver understands and is able to process clearly. फिर उसके बाद जब रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंच जाता है आफ्टर डिकोडिंग, अब वो फीडबैक भेजता है सेंडर को. तो सेंडर जब फीडबैक लेता है तो दैट इज फीडबैक, जो कि रिस्पॉन्स होता है, जो रिप्लाई हम देते हैं आफ्टर रिसीविंग दैट मैसेज. एंड जो पूरे ड्यूरेशन में जो एक चीज होती है, जो एक एलिमेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है, दैट इज नॉइज. नॉइज इज द ऑब्स्टेकल्स, और हर जगह कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स
होते हैं किसी ना किसी सेंस के. All right, moving on to the next question. The process of controlling includes except. Read such questions carefully. I'm repeating it multiple times almost in all the sessions, that try to read such questions clearly. Every question clearly. आपके पास तो offline paper होगा, so you'll be able to like pinpoint with your pen. So that would be quite feasible for you people. Process of controlling includes except बोला है यहाँ पर. except को पढ़ना जरूरी है. जल्दबाजी में सिर्फ includes तक मत पढ़ लेना. Your answer will be wrong. Option number B, absolutely right. ये तो काफी सिंपल था, राइट. हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या कहता है? सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, measurement of actual performance, then comparing the actual performance with the standard set, then analyzing deviations if any, and taking corrective actions. Correct. Moving on to the next question for today. During a bearish phase of stock market, a company may find raising of equity capital more easy, difficult, moderate, impossible. In such questions, don't go on extremes. I would suggest don't go on extremes unless it's specified somewhere. अगर एनसीईआरटी में वो एक्सट्रीम सिचुएशन, एक्सट्रीम वर्ड स्पेसिफाई किया गया है, देन तो वही करेक्ट आंसर होगा. दैट वुड बी द फैक्चुअल क्वेश्चन. देन ऐसे केसेस में आपको क्या समझ आता है, लॉजिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूजुअली हमारे वो नहीं होता है एक्सट्रीम्स. कार्तिक आंसर्स ऑप्शन बी. Rashmi, what should be the answer according to you? Easy, difficult, moderate, or impossible. During the bearish phase, company may find raising equity capital. I have doubt regarding this topic also. What specific doubt do you have in this regards? You can let me know. फिर हम उसको भी solve कर देंगे. No problem. जो भी doubt है आप बता दीजिए मुझे. हाँ, so the correct answer for this question is difficult, absolutely right, which is option number 2. During a bearish phase, there are two kinds of phases that may occur in a stock market or stock exchange, which is a bullish phase and a bearish phase. अब ये कहाँ से आए terms? From two animals whose names are bull and bear. bear क्या होता है? बहुत slow चलता है, and bull क्या होता है? उनके वो होते हैं. तो during boom period, the firm will prefer debt or equity. During boom period, that is the जब हमारा मार्केट काफी अच्छा जा रहा होगा तो उस टाइम पे इक्विटी प्रेफर करेंगे. गुड इवनिंग. या सो बुल फास्ट माना जाता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट की जो कंडीशन है वो काफी अच्छी है, और जो बेरिश पीरियड होता है उसमें काफी स्लो. कहते हैं कि हमारा जो स्टॉक मार्केट की कंडीशन है, जो ट्रेंड है, वो काफी स्लो चल रही है. तो जब हमारा बेरिश है उस टाइम पे कोई डिमांड सप्लाई, डिमांड इतना कोई कर नहीं रहा है, कोई ढंग से अपने मनी को सप्लाई नहीं कर रहा, मनी को फ्लो नहीं करने दे रहा अपने स्टॉक मार्केट में, तो उस केस में कोई भी कंपनी अगर वो अपने इक्विटी को रेज करना चाहेंगी तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू रेज द कैपिटल, बिकॉज वो शेयर्स खरीदने वाले कोई नहीं होंगे उसमें. Option 2, which is difficult. All right. Moving on to the next question. Companies with higher growth pattern are likely to pay higher dividends, pay lower dividends. Dividends are not affected by growth considerations, or increase employees layoff. क्या होना चाहिए इसका आंसर? Option B, pay lower dividends. Correct.
Absolutely right. Companies with higher growth pattern are likely to pay lower dividends. कम dividends pay करेंगे वो. All right, Karthik, all right. Book में it is written that boom period में we must have debt and less in equity. No problem. We'll solve your doubt in tomorrow's lecture or in upcoming lectures. एक बार मैं financial markets का भी जो important topics है, जो mistake prone areas या फिर doubtful areas जो होते हैं, वो मैं एक बार आपसे discuss कर लूँगी. Don't worry about that. विल डिस्कस दिस टॉपिक एक बार इन डेप्थ, बिकॉज अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि बुक में किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिया गया होगा एंड इन जनरल कुछ और कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं, बिकॉज बूम सिचुएशंस में भी बिजनेस साइकिल्स किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, फुल कैपेसिटी में कर रही है या फिर मॉडरेट कैपेसिटी में कर रही है, या फिर स्टॉक मार्केट में बूम चल रहा है या फिर किस क्या सिचुएशन होती है, वो बहुत सारे अलग अलग रिस्पेक्ट्स में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है वो सिचुएशन, तो इट माइट डिफर. तो मैं आपको वो टॉपिक स्पेसिफिक आपको समझा दूंगी एक बार. ऑल राइट, डोंट वरी अबाउट दैट, विल डिस्कस दिस इन वन ऑफ द क्लासेस, इन अपकमिंग क्लासेस. एक बार हम फाइनेंशियल मार्केट्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बार ये चीज समझ लेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज वगैरह. सो डिड यू गेट दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? व्हाई पेइंग लोअर डिविडेंड्स एंड नॉट हायर डिविडेंड्स? Companies with higher growth patterns are likely to pay lower dividends. Why so? Because हमारे जो डिविडेंड डिसीजंस होता है, डिविडेंड डिसीजन में दो तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं, या तो हम रिटेन करेंगे अपने जो प्रॉफिट्स हैं या फिर उनको एज अ डिविडेंड पे ऑफ कर देंगे. तो अगर हम डिविडेंड ज्यादा पे कर रहे हैं या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा पे कर रहे हैं तो हम वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. अगर हम रिटेन ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा जो डिविडेंड अमाउंट होगा वो कम होगा, अगर हम रिटेन कम कर रहे हैं तो हमारा डिविडेंड अमाउंट ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा. तो इस केस में हायर ग्रोथ पैटर्न का मतलब होता है इट इंडिकेट्स दैट दे आर रिटेनिंग हाई, इट मींस डिविडेंड वो कम पे करेंगे. ऑल राइट. The extent of retained earnings also influences the financing decision of the firm. Since the firm does not require funds to the extent of reinvested retained earnings, the decision regarding dividend should be taken keeping in mind the overall objective of maximizing shareholders' wealth. Next question. Identify the factor which affects capital structure of a company. Capital structure में क्या क्या होता है? Equity plus debt. So factor which affects capital structure: current ratio, quick ratio, inflation, interest coverage ratio. This is a direct topic or the direct point which we have studied in the factors of capital budgeting. Yes, because the companies are mainly growth oriented, that's why they like to pay their dividends less. Yes. What should be the answer for this question? There were some factors like cost of capital. Option D, correct. Absolutely right. Interest coverage ratio. Interest coverage ratio refers to the number of times earnings before interest and taxes, which is EBIT, covers the interest obligation. Interest coverage ratio से क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एज अ नेम सजेस्ट कि हमारी जो कंपनी है वो केपेबल है हमारे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए या नहीं. ये जो हमारे कंपनीज जो हमें लोन देती हैं, जो हमें पैसा देती हैं, जिनसे हम बोरो करते हैं, वो ये चेक करते हैं ये रेशियोज कैलकुलेट करके वेदर द कंपनी वुड बी एबल टू पे अस इंटरेस्ट और नॉट. सो दे कंपेयर जो हमारा EBIT होता है विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको हम कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन से कि हमारा नंबर ऑफ टाइम्स कितनी अर्निंग्स है. अगर जैसे हमारा फॉर सपोज 10,000 का इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, हमारी इनकम ही 1 लाख है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो 10 टाइम्स केपेबल है हमें वो 10,000 का अमाउंट
पे करने के लिए। इस तरीके से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। दिस मे बी कैलकुलेटेड एज ICR इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, यहाँ पर डिवाइड आएगा। The higher the ratio, lower shall be the risk of the company failing to meet its interest payments obligation. अगर ज़्यादा हमारा obligation, ज़्यादा रेशियो, इट मीन्स हमारे पास ज़्यादा अर्निंग्स है, ज़्यादा प्रॉफिट्स है, इन ऑर्डर टू पे ऑफ एंड उसको रीपे करने के लिए जो हमारे इंटरेस्ट है उनको पे ऑफ करने के लिए हमारे पास अमाउंट है, तो मतलब कि कंपनी के टुवर्ड्स उसका कम रिस्क है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। यस, दिस रेशियो इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर। ये सिर्फ ये रेशियो यूज करना इज नॉट एडिक्वेट ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप सिर्फ करंट रेशियो यूज कर रहे हो, कोई और रेशियो यूज नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एवरी रेशियो इन इटसेल्फ इज नॉट एडिक्वेट एंड इनफ। आपको मल्टीपल रेशियोज, मल्टीपल तरीके के मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं टू एनालाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ अ कंपनी। तो उस केस में दिस रेशियो इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर। अ फर्म में हैव हाई EBIT बट लो कैश बैलेंस। हमने ये भी डिफरेंस देखना था कि हमारी अर्निंग्स कितनी और कैश बैलेंस कितना, तो कैश और अर्निंग्स में भी काफी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस आर आल्सो रेलेवेंट। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट है वो तो हमने इसमें कंसिडर ही नहीं किया। ये कुछ लिमिटेशंस बता रहे हैं इस पर्टिकुलर रेशियो के, कि जब हमारे पास हो सकता है कि हाई EBIT है लेकिन कैश बैलेंस कम है, तो वो तो ये दिखाएगा कि हमारा ICR तो ज्यादा ही ये दिखाएगा, वो कैश बैलेंस तो नहीं इंडिकेट करेगा। एंड ICR जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस के अमाउंट को कंसिडर करता है, वो प्रिंसिपल अमाउंट को कंसिडर नहीं करता। तो ये कुछ तरीके के लिमिटेशंस है विच प्रूव्स दैट इट इज नॉट एन इट इज एन inadequate measure. Another ratio or another factor of capital structure is debt service coverage ratio. It takes care of the deficiency referred to in the interest coverage ratio. जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई हमने फेस की वो यहाँ पर सॉल्व की जाती है। The cash profits generated by the operations are compared with the total cash required for the service of the debt and preferential capital. It is calculated as follows. A higher debt service coverage ratio indicates better ability to meet cash commitments and consequently company's performance. Moving on to the next question. Select that is not an instrument of money market. Read questions carefully. Which of the following is not an instrument of money market? It is quite easy, I would say. This question is easy. Karthik answers option C. All right. Any other answers? Anyone? There are two kinds of markets, money market and secondary market. Option C, right. Correct answer is option number C, which is debenture. Debentures is the long-term instrument. Moving on to the next question, consider the following facts about management and choose the correct answer from the options given below. Alright, अच्छे से समझना इसे. First option says, efficiency and effectiveness, both terms have similar meaning. Effectiveness and efficiency, both terms do not have similar meaning. Management has 4 dimensions. Management has 3 dimensions. Principles of management are not as exact as the principles of science. Which of the following facts are correct? Karthik answers option C, B, D, E. Absolutely right. Rashmi also answers C. समझ आया, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. कंफ्यूजिंग तब लगेंगे जब आप ढंग से उसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे. आप एक एक वर्ड को काम होकर बाकी ऑप्शंस छुपाकर पहला ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे, फिर सेकंड पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन इजीली लगेगा. यस, B, D, E. Absolutely right. Management has 3 dimensions, not 4. And which 3 dimensions? Work, people, operations.
Principles of management are inexact science. And effectiveness and efficiency, both terms do not have similar meaning. They are different from each other. Effectiveness focuses on doing the right thing within the deadline. Efficiency means doing that particular thing with minimum inputs and maximum outputs. All right. Moving on to next question. Identify the correct features of business environment. ये भी easy होगा. बताओ. What are the correct features of business environment? Karthik answers option C. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अच्छे से आने चाहिए. But the right answer is option C only. A or C. Okay, okay. Okay. सबसे पहले I'll say the correct answer is option number C. This chapter makes me confuse a lot. We'll discuss this chapter also, don't worry. हम एक दिन ये चैप्टर भी रैप अप कर देंगे. बिजनेस एनवायरनमेंट छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा. Correct answer is option C. And Rashmi had doubt कि A or C में. Rashmi, there was this one feature of business environment which was uncertainty. That business environment is uncertain in nature. So A option तो होना ही नहीं चाहिए because they are talking about certainty. बाकी दो are correct as well as partially correct because independent भी नहीं होता. Business environment, it is interrelated. So certainty नहीं होता, uncertainty होता है. Yes, independent नहीं रहते. They are not independent. They are interrelated and dependent on other factors as well. Correct answer is option number C, which is complexity. Complex होता है environment, relativity, comparative comparison होता है and interrelatedness. Second option क्यों नहीं हुआ? Because static नहीं होता, वो complex होता है, वो बहुत flexible होता है. Complex and interrelatedness. Relativity, static and complexity. यहाँ पर static वाली चीज ही है. तो correct answer is option number 3. Yeah. Now is it clear? Certain नहीं होता, uncertain होता है. Yes, it's dynamic in nature. Hi Prashant, hi Prashant. All right, moving on to the next question. ये क्वेश्चन काफी इजी है एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस हैं. To become a chartered accountant in India, a candidate has to clear a specified examination conducted by the Institute of Chartered Accountants of India. Which characteristic of management as a profession is being highlighted in the above statement? Ethical code of conduct, professional association, well-defined body of knowledge and restricted entry. ये हमने एक पिछले लेक्चर में इससे सिमिलर एक क्वेश्चन किया था जिसमें आई गेस हमने आंसर थोड़ा सा गलत कर लिया था. लाइक जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है बुक में, इट वाज रिलेटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशन. रिमेंबर अबाउट दैट बार काउंसिल ऑफ इंडिया. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस. दीज टू क्वेश्चंस आर डिफरेंट. यहाँ पर दे आर सेइंग हैज टू क्लियर अ स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन एंड उस क्वेश्चन में था हैज टू बिकम द मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया. वहां पर एक अथॉरिटी का नाम दिया गया था दैट यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट अथॉरिटी. तो इसलिए वहां पर एक एसोसिएशन था, प्रोफेशनल एसोसिएशन था. यहाँ पर हैज टू क्लियर अ स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन, इट मीन्स रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि आपको एक एग्जाम देकर
उसमें जाना है. आई ब्रॉट दिस क्वेश्चन जस्ट फॉर दिस रीजन ओनली, सो दैट यू गेट द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन. उस क्वेश्चन में प्रोफेशनल एसोसिएशन करेक्ट आंसर है एंड इस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है. आई होप दिस इज क्लियर. All right, moving on to the next question. Which of the following is not an element of delegation? All these questions have been taken from the last two attempts. So try to understand and analyze these questions in that point of view only. All right. Option D. Karthik Aryan's answers option D. Rashmi also answers option D. Correct answer is option number D. Centralization. Authority, responsibility and accountability are the elements of delegation. All right. Next question. Next few questions we have from a case study. These are case study based questions. और इस type के questions आएंगे. Lenovo India decided to strengthen its diversing numbers. It decided to tap its referral system. Referral system क्या होता है? एक organization में एक system होता है, एक प्रोसीजर होता है पूरा कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके रेफरल्स, अगर कोई है फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो एक पर्टिकुलर रोल में आना चाहता है, तो वो हम रेफरल्स ले लेते हैं. गूगल फॉर्म सर्कुलेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें वो अपने रेफरल्स भर देते हैं. The company asked its employees to recommend candidates and decided to reward those who successfully recommended more women for the same roles. Today, technology major Infosys, for instance, has enhanced the use of technology for employees' referral process. It has created a portal where employees can view requirements and submit profiles of candidates directly. Employees can then track the status of their referral real time. कई जगह गूगल फॉर्म सर्कुलेट होते हैं, कई जगह स्पेसिफिक पोर्टल्स होते हैं, रेफरल पोर्टल्स, तो उसमें उस तरीके के दिए गए हैं. I just stumbled a bit. I was supposed to say Karthik answers D and I just stumbled. Yeah, so the correct answer is option number D. All right, answers पहले आ गए. Which external source of recruitment is used by Lenovo India? यहाँ पर एक filter out हो गया कि यहाँ पर internal source नहीं पूछा, external पूछा है, तो ये तो eliminate अपने आप हो जाएगा, right? अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज. तो रेफरल सिस्टम है, एम्प्लॉयज से पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. It involves shifting of an employee from one job to another. Identify the source of internal recruitment. कई केस स्टडीज है ना, वेरी करते हैं. अब हमने पहले कुछ केस स्टडीज पढ़े थे विच वॉज टेकन फ्रॉम द केस स्टडी ओनली. अब यहाँ पर उन्होंने केस स्टडी तो ऐसे दे दी है, बस उन्होंने क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट पूछ लिया. जैसे इट इन्वॉल्व्स shifting of an employee from one job to another, the source of internal recruitment, with source of internal recruitment, ट्रांसफर्स, प्रमोशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स. हम यहाँ पर भी फिल्टर आउट कर दिए कि इंटरनल रिक्रूटमेंट है, तो हमारा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और कैजुअल कॉलर्स है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा. अब ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन में से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. शिफ्ट कर रहे हैं. रश्मि रीड द क्वेश्चन अगेन एक बार. शिफ्ट कर रहे हैं हम एम्प्लॉय को. देयर इज अ डिफरेंस इन, एक तो हॉरिजेंटली शिफ्ट करना और एक वर्टिकली अपवर्ड भेजना. ट्रांसफर होगा. यस, करेक्ट आंसर इज ट्रांसफर. एनी स्कोप ऑफ डाउट? इज इट क्लियर? ट्रांसफर क्यों होगा, प्रमोशन क्यों नहीं होगा? प्रमोशन इज शिफ्टिंग फ्रॉम लोअर जॉब टू हायर जॉब. यस, अगर वो स्पेसिफाई करते हैं कि वर्टिकल शिफ्टिंग है या फिर लोअर टू हायर हो रहा है तो प्रमोशन हम करते हैं. अगर वन जॉब टू अनदर है दैट मीन्स कि हमारा जो लेवल है वो चेंज नहीं हो रहा, वो बस डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है. So it is a shift which is transfers. Yes.
Moving on to the next question. Under which external source of recruitment organizations keep a database of unsolicited applicants in their offices? External source पूछा and options में भी सारे external के ही है. तो organizations keep a database of unsolicited applicants. No problem, no problem. आराम से questions पढ़ो, be calm and composed. Don't get yourself confused. जो आपने पढ़ा है, use your presence of mind at that particular time. जब आप questions exams के दिन में देख रहे होगे, उस टाइम पे use your presence of mind. Unsolicited is basically कि हमें necessary नहीं है, लेकिन जो हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पिछली कभी वैकेंसीज निकाली होंगी, हमने लास्ट मंथ कभी किया होगा, तो जो एप्लीकेशन हमारे पास आई होगी तो वो, और कंपनीज क्या करती है कि वो अपने पास रख लेती है, वो उनको अभी वैकेंसीज या फिर अभी जॉब्स नहीं देती, बिकॉज उनकी जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट थी वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है. तो वो क्या करते हैं कि वो जो उनकी एप्लीकेशन है उनको फेंकते नहीं है, वो अपने पास रख लेते हैं, सो दैट जब नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन रोल आउट होगा, नेक्स्ट वैकेंसी स्टार्ट होगी, तो वो जो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स है, मतलब जो एट दैट पॉइंट ओरिजिनल टाइम पे नेसेसरी नहीं था, लेकिन हमने उस बंडल को रख रखा था, सो दैट इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन उन्हें यूज कर सके. दिस एग्जैक्ट लाइन इज गिवन इन दी एनसीईआरटी ऑल्सो. यस, अनसॉलिसिटेड मीन्स अनकॉल्ड या फिर अननेसेसरी, जो हमने बुलाया नहीं था लेकिन वो आ गए थे हमारे पास, जो हमारे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वैकेंसीज जो सीट्स थी हमारी वो फुल हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन आई उनको हमने रख लिया था. करेक्ट आंसर वुड बी कैजुअल कॉलर्स, विच इज ऑप्शन नंबर डी. कार्तिक, ये लाइन जो है कैजुअल कॉलर्स में हमें अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स वाला एनसीईआरटी में दे रखा है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जहां पर भी अनसॉलिसिटेड टर्म यूज होगा वहां पर ब्लाइंडली कैजुअल कॉलर्स होगा आंसर. ठीक है. प्लेसमेंट एजेंसीज होता है जब कोई कंपनीज किसी, जो प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होता है, प्लेसमेंट एजेंसीज एक तरीके का एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जो हमारे जॉब सीकर्स है एज वेल एज जिनको, जो कंपनीज है हमारी, उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है, वो प्लेसमेंट एजेंसीज होते हैं. यस, करेक्ट आंसर इज कैजुअल कॉलर्स विच इज अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स. ठीक है. एनी डाउट? समझ आ गया ये? बाकी तीनों ऑप्शंस में कोई डाउट है? Any doubt in other three options, or shall I move ahead to the next question? Yes. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आर रन बाय गवर्नमेंट. जो प्लेसमेंट एजेंसीज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं ना, इन दोनों के फंक्शन सेम होते हैं, दोनों मीडिएटर्स की तरह काम करते हैं. द ओनली डिफरेंस इज जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो गवर्नमेंट्स रन करती है, एंड जो प्लेसमेंट एजेंसीज होते हैं वो प्राइवेट होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? सो सिंपल, राइट? बताओ आप फटाफट इसका आंसर. Out of these four options, which one is the internal source of recruitment? Can you observe, यहाँ पर केस स्टडी से रिलेटेड तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, बाकी सारे तो जनरल है. अगर केस स्टडी ना भी होती तब भी हम वो क्वेश्चन कर सकते थे, है ना. ऑप्शन सी, कार्तिक, एब्सोल्युटली राइट. प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स आर द टू ओनली इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. करेक्ट. Next question. Which of the following is not included in external sources of recruitment? Not included in external sources of recruitment, it means internal sources. उल्टा क्वेश्चन दे दिया सेम ही. ट्रांसफर्स. करेक्ट. सिंपल था ये क्वेश्चन. ऑल राइट, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग्स है.
इसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसके स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको आपको लिस्ट करना है एंड मैच करना है विद देयर मीनिंग्स. चलो, आई विल गिव यू 1 मिनट टाइम. फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस क्विकली, बिकॉज अब जैसे ये पिछले 3-4 क्वेश्चन थे, तो बिल्कुल 2-2 सेकंड्स में हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हमारा टाइम बच रहा है, तो क्या करेंगे, जो बाकी क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे उसमें ज्यादा टाइम दे सकते हैं. तो जो क्वेश्चन फटाफट हो रहे हैं उनको फटाफट करना है, बट रिमेंबर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं रहना, कामली पढ़ना है. अगर आंसर आता है तो टिक करना है. अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, फिर जो श्योर श्योर आंसर है वो बताओ. बी श्योर, बोथ ऑफ यू, दोनों श्योर हो डी होना चाहिए? फिर डिस्कस करते हैं इसका आंसर. कार्तिक, वेयर वॉज द कंफ्यूजन? सी क्यों बोला था एंड डी, फिर क्या कंफ्यूजन था? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. वेरी गुड. अब देखो कंफ्यूजन हुआ ना थोड़ा सा मैच करने में, कुछ इधर उधर करने में, तो शांति से आराम से क्वेश्चन करना है. एंड ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चंस ही आएंगे एंड आपके लेवल का ही आएगा जितना आपने पढ़ा है. अगर आप ये लेक्चर्स प्रैक्टिस कर रहे हो ना, रोज अटेंड कर रहे हो ऑन टाइम, दिस शोज योर डेडिकेशन टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, this shows your dedication towards this exam, so you will be able to score good, I assure that. हाँ जी, तो establishing reporting relationships, इसका क्या आंसर होना चाहिए? hierarchical structure for coordination amongst departments. hierarchical से पता लग गया कि यहाँ पर hierarchy chain of command के बारे में बात की गई है. identification and division of work, burden of work can be shared. burden share हो रहा है मतलब divide कर रहे हैं हम काम. Departmentalization, so simple. Similar nature activities are grouped together. And then lastly, assignment of duties, define the work of different job positions. Assign कर दी हमने duties. Okay. Moving on to the next question. Again, अब match the following. And ये जो Consumer Protection Act है ना, वो इसी फॉर्म में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं. Right to be heard, right to be assured, right to seek redressal, right to be informed. हाँ जी. Analyze and understand this question properly. ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी इजी है. क्वेश्चंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है, मैं कल के लेक्चर में मार्केटिंग मैनेज से भी ले लूंगी. कार्तिक आंसर्स ऑप्शन डी. कार्तिक एक बार अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, अच्छे से समझो राइट कौन सा क्या है. गेट रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. राइट टू बी हर्ड कैसे हुआ? गेटिंग अ रिलीफ है. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, अच्छे से एक बार क्वेश्चन पढ़ो. रश्मि एंड ऋषिका आंसर्स ऑप्शन ए. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओनली. कार्तिक, एनी डाउट बता दो. कोई भी डाउट है, स्लाइड सा भी डाउट है, वो भी हम बता देते हैं अभी. हाँ जी. राइट टू बी हर्ड, क्या समझ आ रहा है कि हमें कोई सुन रहा है, हमारी कंप्लेंट सुनी जा रही है, तो फाइल कंप्लेंट इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन इज राइट टू बी हर्ड, कि हमें हमारी जो कंप्लेन है वो सुनी जा रही है एटलीस्ट.
गेट रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। रिलीफ मिल रहा है हमें, रिड्रेसल मिल रहा है। सीक रिड्रेसल का मतलब कि हमारा कोई कंपनसेशन है, रिफंड है, या फिर कोई रिलीफ है हमें उसका, जो हमने कंप्लेन की थी उसके बदले में हमें जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो मिल रहा है। So that is right to seek redressal, which is get relief against unfair trade practices. Complete information about the product. हमें सारी information मिल रही है, information से ही word आता है right to be informed. So C4. And then freedom to access variety of options, मतलब we have the multiple options to choose from, to select from. So right to be assured is the correct answer. right to be assured का दूसरा मतलब होता है right to choose. Seek redressals are court, so I thought it was correct. All right. Seek redressals are basically कि हमें relief मिल रहा है, हमें compensation मिल रहा है हमारी complaint के against. So correct answer is option number A. Now is it clear? Or still there is any doubt? Yes. अगर कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट केस है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने या फिर डिस्ट्रिक्ट एजेंसी में रिजॉल्व नहीं हुआ है, फिर हम उसे नेशनल में लेकर, स्टेट में लेकर जाते हैं, सॉरी स्टेट में भी नहीं होता, फिर नेशनल में एंड देन टू सुप्रीम कोर्ट, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो डिस्ट्रिक्ट तक ही रिजॉल्व हो जाता है, बिकॉज हमारा कंसिडरेशन अमाउंट कम है, तो वो डिस्ट्रिक्ट ही सॉल्व कर देती है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जरूरत ही नहीं पड़ती सुप्रीम तक पहुंचने के लिए. नो डाउट. ऑल राइट. Next question. State which of the following combination are correct for on-the-job methods of training. Yes, within 30 days. Conferences and internships, job rotation and coaching, apprenticeship and internship, case study and computer modeling, vestibular training and job rotation. बताओ. Rashmi, there is this term which we read about, which is mediation, right? Remember, जो negotiate कराता है दोनों parties के बीच में, तो जहां जहां mediation होता है वहां वहां सारे जो negotiations, agreements, complaints है वो सारे redress हो जाते हैं, वहां सारे reliefs and compensation मिल जाते हैं. So कोई scope नहीं होता if the customer get dissatisfied. Yeah, it can be taken to the Supreme Court. That's what I'm saying, that मैंने डिनाई नहीं किया फैक्ट दैट इट कैन नॉट बी टेकन अप टू द सुप्रीम कोर्ट. इट कैन बी टेकन, बट कुछ कॉन्टेक्स्ट अलग है हमारी बुक में. बट अगर आप इन डेप्थ अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को देखोगे, उनकी कंसिडरेशन, नंबर ऑफ डेज, नेगोशिएशंस, उन सबको जब देखोगे ना एक बार, तो यू विल बी एबल टू सी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा केसेस होते हैं वो अगर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल नहीं रिजॉल्व कर पाते तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं. बट इफ योर एनसीईआरटी सेज इट कांट बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट, देन कुछ कुछ चीजें आई ऑलवेज से इन दिस लेक्चर्स, ऑलवेज से इन दिस सेशंस, कि कुछ कुछ चीजें होती है जो हमें एग्जैक्ट याद करनी पड़ती है, व्हाटएवर हैज बीन रिटन इन द बुक. जो जो चीजें हमारी बुक्स में कई कई चीजें होती है जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है जो रियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट स्पेसिफाइड इन योर बुक्स एज पर जो एक्चुअल में चीजें होती है. बिकॉज क्या होता है कि हमें बुक में बहुत लिमिटेड कंटेंट दिया होता है, जितना हमें हमारे जो 12th का लेवल है, CUET का लेवल है, सिर्फ उतने तक का ही हमें कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है. लेकिन वो थ्योरीज इतनी बड़ी बड़ी होती है, रिसर्च पेपर्स होते हैं उसके बारे में, तब जाकर वो थ्योरीज बनती है. तो वो चीज यही जस्टिफाई करती है कि जो कुछ कुछ चीजें होती है जो हमारी जो जनरल स्टेटमेंट्स है, जो हमारी डेफिनेशंस है या फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एंड गाइडलाइंस है, उनसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है, लेकिन हमें उस चीजों को एग्जैक्ट याद करना पड़ता है अगर कुछ कुछ चीजें हमें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है तो. ठीक है. अगर इट्स रिटन इट कांट बी टेकन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इट कांट बी टेकन, तो यू हैव टू आंसर कि हाँ इट कांट बी टेकन. बट एक्चुअल में ये चीज होती है, अगर आपका रिजॉल्व नहीं होता तो यू कैन टेक इट टू द सुप्रीम कोर्ट. बिकॉज मैंने यही चीज बोली ना आपको कि यूजुअल केसेस क्या होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट तक ही रिजॉल्व हो जाता है और स्टेट का स्टेट तक ही रिजॉल्व हो जाता है, वो आगे तक सुप्रीम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो जो बुक
की लैंग्वेज है वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे कि कोई जानने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए दे हैव गिवन दिस कंक्लूजन देयर एंड दिस ओनली कि इट इज कंक्लूडेड दैट इट कांट बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। बट एक्चुअल रीजन क्या है कि वो यूजुअल द केसेस जो हमारे एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल लाइफ में केसेस होते हैं वो स्टेट तक रिजॉल्व हो जाते हैं, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल राइट, तो इसका आंसर यू आर आंसरिंग ऑप्शन नंबर सी, बी एंड सी, जॉब रोटेशन, कोचिंग, apprenticeship and internship. Correct. Option number C is the correct answer. Next question. Consumer Protection Act, District Forum, State Commission, National Commission. चलिए यहाँ पर अमाउंट का दिया गया है एंड आई गेस ये थोड़ा सिंपल हो सकता है। अदर देन दैट ऑप्शंस में भी हमें दिख रहा है कि ए का आंसर 3 है, तो मतलब इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे फॉर अदर 3 आंसर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का आंसर एस्टैब्लिश इन 1963 ही है, 1986 है। Hi Shivam. Shivam answers option C. All right, all right. कार्तिक आंसर्स बी, रश्मि आंसर्स ए, सबके अलग अलग है। एक करेक्ट ही होगा, सबके सेम तो नहीं हो सकते, सारे आंसर्स तो नहीं हो सकते करेक्ट। सब लोग एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ो, वापस आंसर करो। इज एवरीवन श्योर ऑप्शन बी है? लॉक कर दें? ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। Shivam, I hope you people are getting some help and insights from these sessions. Then only it will be mattered, and tabhi it would be a good way of teaching. Question is wrong. How come? Ishika, where is the question wrong? Please let me know. Hi Danglao. Danglao options option B. Be sure. Hanji. So the correct answer is option number B, which is this. Yes, question is right. Ishika, where is the question wrong? Please let me know. District Forum, settlement of claim up to 1 CR. State Commission, settlement of claims exceed 1 CR but does not exceed 10 CR. And National Commission, claims exceed 10 CR. Yeah. जो फिगर्स है वो ओल्ड एनसीईआरटी में अलग है, न्यू एनसीईआरटी में अलग है। फॉलो द फिगर्स ऑफ न्यू एनसीईआरटी। Any other doubt? This was the last question for today. Ishika, 20 lakh is the amount according to the old NCERT. You have to follow the new NCERT. न्यू एनसीईआरटी में अमेंडमेंट आए थे और अमेंडमेंट में अमाउंट्स चेंज हो गए हैं। अप टू 1 CR हमारा क्या होता है? अप टू 1 CR हमारा अमाउंट जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये फिगर्स है, यू कैन राइट इट डाउन समवेयर। अलॉन्ग विद दिस कंसिडरेशन अमाउंट्स नंबर ऑफ डेज भी चेंज हुए हैं। तो फॉलो द न्यू एनसीईआरटी फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। up to 1 CR, district commission between 1 CR
to 10 CR, it's state commission, and then more than 10 CR, it's national commission. Yeah. No doubts? Any doubt related to any other subject or any in general doubt? ओ यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं वापस. Up to 1 CR district commission, between 1 CR to 10 CR state commission, and then more than 10 CR it's national commission. Yeah, Ishika got to know about the new and old NCRT. Yes, I'll bring the marketing questions tomorrow. Yes, please ask what is the doubt, Ishika, you have. Very good, Karthik. It's a really good score, 170 out of 200. Try to improve it as well. Very good. Dividend received from investment made by government is revenue receipt. Dividend receipt received from investment, income, capital and revenue from investment. Revenue receipts and revenue expenses होते हैं which are recurring in nature, right? इन केस अगर बाकियों को भी क्वेश्चन का आंसर में कोई डाउट है या फिर आंसर पता है तो दे कैन ऑल्सो टेल इन दी लाइव चैट. Dividend received from the investment, I'm not sure about it, I'll just read about this एक बार in detail, but मेरे according it should be revenue receipt, because revenue receipt are basically recurring and investment में से हम dividend receive कर रहे हैं, that should be revenue receipt. ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आई नो दैट. जो हमारा गवर्नमेंट बजट है, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस में क्या होना चाहिए, आई एम नॉट रियली श्योर राइट नाउ, बट आई लेट यू नो इसका आंसर क्या. क्या सीबीएसई के पैटर्न में चेंज आया है? थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया, बट एग्जैक्ट क्या चेंज आया है वो आप अच्छे से बता सकते हो तो बताना, क्या चेंज आया है एग्जैक्ट. It should be revenue receipt only. इसका आंसर रेवेन्यू रिसीट ही होगा. Yes, it is a revenue receipt. Yeah, I wasn't sure, but हाँ सही है, revenue receipt. I just checked it right now.
इट्स रेवेन्यू रिसीट ओनली, बिकॉज रेवेन्यू रिसीट का क्या होता है, डिफरेंस क्या है हमारा कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में? रेवेन्यू रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार सेम चीज होती है। कैपिटल में हमारा फोकस होता है एसेट या फिर लाइबिलिटी पे, कि अगर रिसीट है हमारी तो कैपिटल रिसीट है, मतलब कि या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी या फिर हमारा एसेट कम होगा। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं, अगर हम द क्वेश्चन सेज कि हमने इन्वेस्ट किया है किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर पीएसयूज में इन्वेस्ट किया है, तो दैट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारा उसमें एसेट इंक्रीज हो रहा है और हमारी लाइबिलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इस केस में हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है किसी एक्सवाईजी इन्वेस्टमेंट में से, इट मीन्स कि हमें इनकम रिसीव हो रही है किसी इन्वेस्टमेंट में से। तो एक तो ये हमारा रिकरिंग इन नेचर है, और ये ना ही हमारा एसेट को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, ना ही लाइबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। इसमें इट मीन्स कि ये कैपिटल रिलेटेड नहीं है, ये रेवेन्यू रिलेटेड है, एंड रेवेन्यू रिकरिंग इन नेचर होता है, और रेवेन्यू इज समथिंग जो कैपिटल या फिर एसेट लाइबिलिटी पे फर्क नहीं डालता, तो इसलिए रेवेन्यू रिसीट है। Yes, it neither creates any liability nor reduces an activity and asset. Yeah. I scored 99 percentile in economics. I don't remember the exact score. It was 99 percentile. Exact score 200 में से क्या था मेरा? I don't really remember. I guess it was around 197 or something on those lines. I don't remember the exact number, but it was 99 percentile. इट वॉन्ट इंक्रीज एसेट कार्तिक, बिकॉज इसमें एसेट का क्या फर्क पड़ रहा है, इसमें तो हमें ये अगर बोलते कि हम इन्वेस्टमेंट में पैसा अप्लाई इनकर कर रहे हैं, तो एसेट हमारा इंक्रीज होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ना कि रिसीट में। हमारा इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा है, दो तरीके की चीजें होती है, एक तो हमारा रिसीट्स होती है, एक एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फिर रिसीट्स भी हमारे कैपिटल रिसीट्स होती हैं और रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, राइट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर्स भी हमारे या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं या फिर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, राइट। अब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स में क्या डिफरेंस होता है, रिसीट्स मतलब कि हमारा पैसा आ रहा है, मतलब पैसा इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से याद कर लो इसे। एक्सपेंडिचर मतलब हमारा खर्चा हो रहा है, पैसा कम हो रहा है। तो अब कैपिटल रिसीट मतलब हमारा ज्यादा पैसा आ रहा है, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने किसी से बोरो किया होगा तो वो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर देगा या फिर एसेट डिक्रीज कर देगा। जैसे कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, हमने उसे बेच दिया, तो हमारे पास बदले में पैसा आ रहा है लेकिन हमारा एक एसेट खत्म हो रहा है, तो वो रिड्यूस हो रहा है। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, जो रेकरिंग नेचर इनकम्स होती है, इनकम होती है जो हमारी, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड फॉर फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट, या फिर जैसे टैक्स रिसीट्स होती है, वो रेवेन्यू रिसीट्स होता है एक गवर्नमेंट के लिए, तो ये इनकम हुआ हमारा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई मोटा खर्चा जो हम कर रहे हैं, फॉर सपोज परचेजिंग एनी एसेट, तो इससे हमारा एसेट तो इंक्रीज होगा एंड लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। फॉर सपोज कि हमने किसी से बोरो कर रखा था पैसा, अब हमने उसके रीपेमेंट कर दी, तो हमारा पैसा गया रीपेमेंट में और लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि अब लाइबिलिटी बची ही नहीं है हमारे पास, हमने रीपेमेंट कर दिया, तो हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो हमारा रेगुलर बेसिस पे खर्चा होता है, जैसे मेंटेनेंस चार्जेस हो गए या फिर एम्प्लॉयज या फिर स्टाफ की सैलरी हो गई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में होता है। तो इस तरीके से इसको याद करो, और कोई भी केसेस जैसे आ जाते हैं ना, तो उसको इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से चार सिनेरियोस बनाकर देखो कि चारों में से कौन सा सिनेरियो उसमें सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट था, तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट पे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, वो तो हमें, अब आप गवर्नमेंट को छोड़ दो, आप खुद अकेले हो, आपने पैसा इन्वेस्ट किया बैंक में, तो अब आपको, आपने सेविंग्स अकाउंट में या फिर किसी भी XYZ इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने इन्वेस्ट किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि आपको मंथली आपको अमाउंट्स मिलेंगे, तो वो आपको अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, आपको वो खुद का जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी ना वापस मिल रहा है, तो उससे आपका एसेट या लाइबिलिटी पे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो वो आपकी इनकम है, तो दैट वुड बी रेवेन्यू रिसीट।
Rashmi, I hope you people also score well and I wish you all the very best. सारे सब्जेक्ट्स में अपना बेस्ट देना और कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. आई ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल एंड अगर उस दिन पे जैसे आज ये क्वेश्चन था अगर उस दिन मैं नहीं सॉल्व कर पाई आई विल बी एबल एंड आई प्रॉमिस यू पीपल कि मैं उसके बारे में नेक्स्ट डे आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी. ऑलराइट, एनी अदर डाउट? इशिका, रश्मि, दंगलाउ, शिवम, कार्तिक, एनी अदर डाउट प्लीज लेट मी नो सो दैट हम उसको सॉल्व करते हैं. इफ देयर आर नो डाउट्स then we'll wrap up the session. All the very best Rashmi. I hope you people get good score and जो dedication आप लोग हर session में दिखा रहे हैं आपके questions भी accurate जा रहे हैं and ये persistence and consistency matter करती है and I wish you all the very best. All right. So in case you are interested in taking up the mock test series and crash courses of ExamFactor, you can visit their official website. The link has been given in the description below. You can check that out. And other than that, you can use my coupon code which is CDEF20 for straight 20% discount. You can log in with your contact number and one of the representatives from our team would be contacting you throughout the process and guide you throughout the session. All right. Meetup at Delhi. दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाओ सब, फिर मीटअप करते हैं अच्छे से स्कोर करके नॉर्थ कैंपस, एम द नॉर्थ कैंपस एंड देन डेफिनेटली देयर विल बी द मीटअप एट दिल्ली, पक्का से. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट. शैल आई एंड द सेशन नाउ? Thank you for you people to join in and show interest and to be a good audience and respond interactively. That's really appreciable for you people. Definitely, that's the spirit, Rashmi. I just hope you people score good. एंड अगर स्कोर अच्छा आता है वो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड होगा ऑनेस्टली एंड आई विल बी ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर यू पीपल एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. Thank you so much. Thank you so much. All the very best. Keep learning and stay fit. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी है, इंजॉय भी करना है, अपने खुद भी अच्छी डाइट लेनी है, गर्मियाँ आ रही है अच्छे से पानी वानी पीना है. ओके, डोंट स्ट्रेस आउट. ईजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होगा कुछ भी, सब अच्छा हो जाएगा. ऑल राइट, जस्ट ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी गुड. ऑल राइट, चलिए, thank you so much for joining. All the very best and keep learning. Bye bye.